Hello everyone, and Rajesh the side. So today we are going on Nainital for the street photography, and you see in my last video we shoot photos on Bhimtal, but today we are going on Nainital, and today one of my friend, he is a photographer. He is also with me, so I'm waiting for him. We'll see what kind of photographs we can capture. So stay with us, and I will show you how we will shoot and all the things which I can cover. See you soon. ओके तो गाइस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अभी नैनीताल में, जहाँ हमने करना है शूट। तो शूट के लिए देखिए हमारे पास अभी कैमरा है निकॉन का 7000D। तो यही कैमरा हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया हुआ था। और साथ में मेरे साथ है अभी मुकेश भाई, तो ही इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर का खुद का अपना एक फोटो स्टूडियो है। तो एक अच्छे काफ़ी गाइड कर लेंगे हमें कि किस तरीके से हमें फ़ोटो शूट करना चाहिए। तो बेसिकली एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ और फेस की कि हमें जब अगर फ़ोटो शूट करने के लिए हम जा रहे हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो अपने साथ जो भी आपका सामान है उसे कम से कम रखिए। तो आपके पास सामान अगर ज़्यादा होता है तो आप अपने सामान को ही एंगेज करने पे रह जाते हैं। तो अपने साथ जितना कम सामान हो उतना अच्छा है। और इसको अब हम कर लेते हैं कुछ। यहाँ स्ट्रीट फोटोग्राफी आप देखेंगे वहाँ बोर्ड चल रही है, तो उनकी हम कोई फ़ोटो शूट कर लेंगे। इसलिए क्या है, इसको अभी हम मैनुअल मोड में यूज़ कर रहे हैं, मैनुअल मोड में। और इसका जो अभी हमारा लेंस है वो है हमारा 18-140 का, 18-140 का है। तो लेट्स सी, इस पर हमने मैनुअल मोड में रखा हुआ है। और अभी इसका जो ISO है वो 400 मैंने सेट किया हुआ है। तो इसका हम लोग कर ले रहे हैं इसका फोकस सेट। तो फोकस सेट करने के लिए क्या है, इस पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये आप एक पॉइंटर देख रहे होंगे, तो ये है हमारा सिंगल पर्सन का। अगर हम फोटो क्लिक कर रहे हैं तो हम ये वाले पे रख लेंगे। अगर हमारे कोई 2 बंदे हैं तो उसके लिए हम ये वाला रख लेंगे। एंड अगर हम किसी ग्रुप की फ़ोटो कर रहे हैं तो इस तरीके से कर लेंगे। तो होगा क्या, अगर जैसे ही हम ये करते हैं तो ग्रुप में जितने ही बंदे हैं वो सारे के सारे फोकस्ड आएंगे। तो इसलिए हमारे फोकस इस तरीके से रख लिया है। एंड ISO अभी हमारा जो डे लाइट का है मौसम और ठीक है, तो इसलिए हम ISO को नॉर्मल रख लेंगे, अब 200 अराउंड अप्रॉक्स। लेट्स सी। तो इसे हम क्लिक कर लेते हैं। और इसके लिए पहले आप कहीं भी अगर फोटो क्लिक करने जा रहे हो तो थोड़ा सा वहां लो, देख लो, देन उसके बाद फिर आप क्लिक कर सकते हो। तो अगेन स्टार्ट करते हैं। 2000 years later. So yes guys, I'm back. The shoot is done by yesterday. Because of the heavy raining, we reached at late night at home. So that's why I haven't created any video. But I created a video today morning. Also I feel very regret and I apologize for that. I haven't get the chance to shoot a proper video of myself when I take pictures on street. Next time I will try my best to give you a proper content and on a better way, so you can understand more how I shoot the picture and what is the location exact. I created this video because on the last time I thought that there is a lot of things happening with us. What happened when you go for the street photography, so you have to make sure that the camera safety is most important. This is the first thing. So you always put it on your carry bag, on a camera carry bag. This is, make sure you have waterproof carry bag. And also if you have not a waterproof, so you just take any polythene and another bag. So when we go on that place on Nainital, where we saw there is a lot of cloudy weather. So what happened when we try to click some pictures? So what happened? The fog is also come on our camera, not on the lens, but on the upper surface. So when you click the pictures, the lens is fine, but you saw that in that screen you found that there is a lot of foggy area under the screen. But if you continue to shoot this kind on this weather, so there is a lot of probability maybe your camera will get some issue later. Make sure whenever you go on that kind of weather, so you put your camera on your bag on safely. I am giving my example when we try to shoot this whole street photography. So there is an Nainital, this place. There is a lot of fogs. So what happened when we click the pictures? So we saw that there is a fog under our camera.
So I afraid that what happened it because it's not my camera, and friend has told me that this maybe happened because of the cloud and because of the weather. So yeah, that is true. And we saw the other photographers who are doing a street photography and other kind of. So they told us to put your camera on your back because there are a lot of fogs, so this will create a problem with your camera. So make sure whenever you go outside and the weather are not good, there are fog, so you just put your camera on your back and wait for the weather. When the weather is still fine, so you can just again your reshoot. So we do the same, and I will show you the pictures which I clicked, and next time I will make sure to create a whole video how I shoot at that time, because now I'm just starting and I am just continuous trying to improve my content. So in the next time I will make sure that I will shoot a proper video of myself as well at the same time when I click the pictures of the street, so you'll get a more information. And also the pictures you are seeing here, when there are raining, lot of raining outside, so I go in some shop and I click the pictures from there. So you can just do the same when you feel that there is raining and the weather is not good. So you can just go on inside of any shop and just click a random picture. So there's a raining, continuous raining between 1-2 hours. So for that I got a chance to click that type of pictures. So yeah, there is a lot of learning. And yeah, definitely in the next video I will try to make more informative content, so this will be helpful for you. So for now, thank you so much, and we will meet in the next video. Bye bye.